Giant exoplanets like the so-called hot Jupiters that are similar in dash to the solar system's biggest planet and orbit very close to their host stars. Giant exoplanets like so-called hot Jupiters that are similar in characteristics. Similar किस चीज में है? Characteristics में to that solar system's biggest planet and orbit very close to their host stars and are excellent targets for dash. Excellent targets किसके लिए है? Astronomers के लिए. For astronomers in their search for their extrasolar worlds. The size and proximity of these planets is easy to detect as they create a large decrease in brightness when passing in front of their parent stars. So our first answer is similar in characteristics. Targets for astronomers. For their extrasolar worlds. To detect as. So, some of the time an intellectual challenge is to assimilate how similar we can be to other species. Sometime क्या होता है जो intellectual challenge होता है sometime क्या होता है कि हमें लगता है कि हम दूसरे species से इतने similar क्यों हैं. In other cases the challenge is to appreciate how though human psychology dash that of other species. Human psychology dash that. Human psychology fakes, applies, confirms, resembles. Human psychology resembles that of other species. We use the physiology in novel ways. We activate the classical physiology of vigilance while watching a scary movie. We activate a dash. कोई भी scary movie देखेंगे तो क्या होगा? Stress hormones, stress response. When thinking about mortality, we secrete hormones related to nurturing and social bonding, but in response to an adorable baby panda, and this certainly dash to aggression. This certainly applies to aggression. We use the same muscles as does a male chimp attacking a sexual competitor, but we use them to harm someone because of their ideology. So our first answer is human physiology resembles. Human physiology resembles. We activate a stress response. Certainly applies to. In 2001, he received the SIUC Outstanding Scholar Award. In 2003, he received the Krasky Award for Distinguished Undergraduate Teaching from the American Society for Microbiology. किसके बारे में बात कही हुई है? माइक के बारे में. क्लियर? तो यहाँ पे क्या यूज किया हुआ है? प्रोनाउन. क्लियर? उसके बाद नाम दिया हुआ है. Mike's research is dash on bacteria. Mike's research is focused on bacteria that inhabit dash environments. That inhabit in extreme environments, and for the past 12 years he has studied the microbiology of permanently ice covered lakes in the McMurdo dry valleys Antarctica. क्या कहा हुआ है? जो माइक की रिसर्च है वो फोकस करती थी बैक्टीरिया पे एक्सट्रीम इन्वायरमेंट में, और पिछले 12 सालों से वह कहाँ काम कर रहे थे? माइक्रोबायोलॉजी में, कि एक जो मैकमुर्डो ड्राई वैली है अंटार्कटिका में जो पूरी तरह से आइस से कवर्ड है. नेक्स्ट, in addition to his research papers, अपने research papers के अलावा he has edited a major treatise. उन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट भी साइन किया है on photographic bacteria and served for over a decade as chief editor of the journal Archives of Microbiology. और एक दशक से भी ज्यादा वो कहाँ काम कर रहे हैं? एज अ चीफ एडिटर Archives of Microbiology में. He currently serves on the editorial board of Environmental Microbiology. और ही करंटली सर्व्स, आज कहाँ पे काम कर रहे हैं? एडिटोरियल बोर्ड में काम कर रहे हैं इन्वायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी के. माइक्स नॉन साइंटिफिक इंटरेस्ट्स, माइक का जो नॉन साइंटिफिक इंटरेस्ट है इसके अलावा और क्या करते हैं? इंक्लूड फॉरेस्ट्री, रीडिंग एंड केयरिंग फॉर हिज डॉग्स एंड हॉर्सेस. ही लिव्स बिसाइड अ पीसफुल एंड क्वाइट लेक विद हिज वाइफ नैन्सी. 5 शेल्टर डॉग्स, डॉग्स के नाम दिए हुए हैं, एंड 4 हॉर्सेस, अगेन हॉर्सेस के नाम. सो आवर फर्स्ट आंसर इज focused on extreme environments, major treaties, journal archives,
नॉन साइंटिफिक इंटरेस्ट, मोस्ट ऑफ द टाइम आपका बिसाइड भी आंसर होता है फाइनल एग्जाम में. ही लिव्स बिसाइड. To qualify as a conservancy, a committee must define the conservancy's boundary. To qualify a conservancy, किसी भी conservancy को qualify करने के लिए कमेटी के पास क्या होना चाहिए? conservancy's boundary होनी चाहिए. Elect a dash conservancy committee. Elect a representative conservancy committee. Negotiate a legal constitution. उसके लिए क्या होना चाहिए? एक legal constitution होना चाहिए. Prove the committee's ability to manage funds and produce an acceptable plan for equitable distribution of wildlife related benefits. क्या कहा है यहाँ पे कि एबिलिटी होनी चाहिए उस कमेटी के पास मैनेज करने की फंड्स को और प्रोड्यूस करे एक एक्सेप्टेबल प्लान जिसमें इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड जो बेनिफिट्स है सभी के लिए. वंस अप्रूव्ड, एक बार जब वो अप्रूव्ड हो जाए, रजिस्टर्ड कंजर्वेंसीज एक्वायर द डैश, एक्वायर द rights, acquire the rights to a sustainable wildlife quota set by the ministry. So our first answer is representative conservancy, to manage funds, wildlife quota, for equitable distribution, rights to a sustainable wildlife. Much has been said of the Latino vote in this election, which is something I know a little bit about. इन्होंने क्या कहा है कि यहाँ पर हम लेटिनो वोट की बात करेंगे जो इलेक्शन में है, बट मुझे भी उसके बारे में कुछ पता है. Having been working dash over it for the last 16 years, having been working obsessively, कि obsessively उस पे लेटिनो वोट के बारे में काम कर रहे हैं जो राइटर है यहाँ पे 16 ईयर से. Latinos are the fast growing demographic. Latino क्या है? Fast growing demography है with the largest voter registration cap in America. A Latino youth turns 18. Latino का जो youth है 18 में टर्न हो रहा है every 30 seconds, while the mode of whites in America is 58. The mode for Latinx is 11 years old. You heard that right. And it's these new voters, जो ये नए वोटर आ रहे हैं यंग एज के, and the youth who are translating America for their immigrant families, who are leading the charge for audacious change. Audacious का मतलब होता है very difficult, जिस चीज को चेंज करना बहुत ज्यादा हार्ड हो, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो. audacious change. So our first answer is working obsessively, fast growing demographic, immigrant families, audacious change. Done. Like, share and subscribe the channel for upcoming videos and also press the bell icon for notifications.